इम्प्लांटेशन। ये था प्रीवियस क्लास का टॉपिक, इम्प्लांटेशन to be occur after the releasing of the embryo from the zona pellucida, right? Zona pellucida जब तक है implantation नहीं होता। So that is the reason why when the blastocyst comes out of the zona pellucida, now it is the structure ready for the implantation. मैं डायरेक्टली इम्प्लांटेशन का स्ट्रक्चर मेंशन कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअली इम्प्लांटेशन कैसे होता है ना, इम्प्लांटेशन होने के लिए क्या होना चाहिए ना, एंडोमेट्रियम का जो वॉल है वो रप्चर्ड होना चाहिए। रप्चर्ड होगा तभी जाके इम्प्लांटेशन पॉसिबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इम्प्लांटेशन मींस व्हाट ना, द एम्ब्रियो विल बी that is implanted inside the uterus endometrium very tightly so that the chances of abortion or the releasing of the embryo unknowingly that will not occur. समझ में आ रहा है? एंड इसीलिए ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा ना, एक लाइटिक एंजाइम सीक्रेट करेगा एंड दैट लाइटिक एंजाइम विल एक्ट एज ए ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम और इरोजन ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंड एंडोमेट्रियम का इरोजन होने से क्या होगा ना, इम्प्लांटेशन परफेक्ट होगा, प्लस वहां पे विली फॉर्म होगा। ट्रोफोब्लास्ट विली भी फॉर्म करेगा एंड उस विली की वजह से क्या होगा ना, इम्प्लांटेशन और अटैचमेंट और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ट्रोफोब्लास्ट secrete and a lytic enzyme which cause erosion of endometrium for implantation, and also erosion of endometrium and also for release or strong attachment called implantation. तो यहाँ पे झिल्ली का दो रोल है, झिल्ली का यहाँ पे दो रोल है। एक तो अटैचमेंट का काम करता है क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया ना, that is why it is helps in increasing the surface area for the attachment. Number 2, ये absorb करता है न्यूट्रिएंट। तो इसका दो फंक्शन है, एक तो absorption of nutrient from the endometrial wall, second is act as a finger like projection structure to increase the surface area for the attachment. See, let's have a diagram for this.
मैं इम्प्लांटेशन का डायग्राम बना रहा हूँ। प्रीवियस क्लास का डायग्राम एक बार चेक करिए। प्रीवियस क्लास का जो डायग्राम था उसमें एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने आपको जो बताया था ये एम्ब्रियोनल नोड था। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोला कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप देखेंगे यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट था, एम्ब्रियोनल नोड था, एज बिकॉज दिस इनर सेल मास it is to be present in one side to form the knob like structure and उसका opposite side में blastocyst था। समझ में आया? Now this embryonal knob will rearrange to form the embryonic disc. Will rearrange to form the embryonic disc. Let's see the diagram. And ये हो गया villi. And villi embryo के चारों तरफ and this embryonal knob will rearrange to form the embryonic disc. Now this is the uterus. ये है यूटेरस का एंडोमेट्रियम। अब क्लियरली देखिए यहाँ पे विली फॉर्म होने के बाद ये जो अटैचमेंट है देखो स्ट्रॉन्ग हो गया। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई द इम्प्लांटेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये हो गया सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स का जो कैनल है ना, ये कैनल क्या होता है ना, कंप्लीटली क्लोज्ड हो जाएगा। अगर ये कैनल क्लोज नहीं होगा तो आउटसाइड में जो एनवायरनमेंट है उसमें जो हार्मफुल एजेंट है वो डायरेक्टली एंट्री करेगा to interfere the embryonic development of the fetus or embryo. And that is why this cervical, हम लोग पढ़े थे कि cervix में gland होता है but vagina without gland. तो cervix में जो mucus secreting gland है, under the influence of progesterone hormone, बहुत ही यूनिक चीज है ये। Under the influence of progesterone hormone, the cervix contains the cervical gland, that is mucus gland. तो ये mucus gland बहुत ज्यादा stimulated होगा and they will produce a thick mucus, and that thick mucus will be deposited in the cervix to prevent the or that block the cervical canal, and usko bolte hain cervical plug or mucus plug under the influence of which hormone? Progesterone. Now try to understand. मैं फिर से लेबलिंग कर दूंगा, पहले समझा देता हूं। Once the implantation will occur, now the endometrium of the uterus, now it is called as what? Na, decidua. What is the meaning of decidua? Now after implantation the part of the endometrium, मतलब ये maternal part हुआ कि fetal part हुआ? Maternal part. Decidua is a maternal part because after the implantation the structure formed
in the endometrium wall of uterus is called as decidua. तो डेसिडुआ तीन अलग अलग टाइप का होता है. जो मेनली जहां पे इम्प्लांटेड हुआ दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना डेसिडुआ बैसिलिस. मतलब डेसिडुआ बैसिलिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द विली एंड मायोमेट्रियम. समझे कि नहीं? ये हो गया विली, ऊपर क्या है एंडोमेट्रियम के नीचे क्या है मायोमेट्रियम है कि नहीं. तो मायोमेट्रियम एंड विली के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना डेसिडुआ बैसिलिस. ठीक है. नाउ डेसिडुआ कैप्सुलरिस क्या है ना, अब देखेंगे ये डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं. दस villi is not present in a single part or part only or restricted part only. The villi is completely formed from all sides. So that I am implantation. देखो ये 3D में आपको समझना पड़ेगा. ये फीटस है तो फीटस तो चारों तरफ से इम्प्लांटेड होना चाहिए ना. ये खाली एक साइड में इम्प्लांटेड होगा, चारों तरफ से इम्प्लांटेड होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे villi देखकर चारों तरफ से लिखा है. So this part of the villi, which is the part of the decidua which is present in between the lumen, मतलब एक गैप जो क्रिएट हो रहा है ना उसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस. समझे? एंड डेसिडुआ parietalis, the third type of decidua, it is the decidua which does not participate in the implantation. ऐसे भी तो होगा यूटेरस का कुछ पार्ट जो इम्प्लांटेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा. दैट पार्ट ऑफ द इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर, सो दैट पार्ट ऑफ द यूटेराइन स्ट्रक्चर आफ्टर इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड एज व्हाट पैरेटलिस. मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. कंटिन्यू. हाँ मैं लिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाए. डेसिडुआ बैसिलिस, this is villi, this is trophoblast, this is embryonic disc, this is decidua capsularis, ये हो गया decidua capsularis, this is decidua parietalis. मैं डेफिनेशन के साथ सब कुछ मेंशन कर दूंगा, डोंट वरी. ट्रोफोब्लास्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में क्लियरली समझाया था. Trophoblast does not have any role in the formation of embryo. It is completely protecting the embryo. So what is the function of trophoblast? Na extra embryonic membrane. It is not the embryonic membrane, it is extra embryonic membrane. समझ में आ रहा है कि नहीं? So ये extra embryonic membrane क्या फॉर्म करता है ना? That form amnion, chorion and fetal part of placenta. तो इसका मतलब है ट्रोफोब्लास्ट का क्या रोल है? amnion, chorion and fetal part of placenta is contributed by the trophoblast. और एक फंक्शन मैंने बताया है क्या? It secrete the lytic enzyme. और एक फंक्शन मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट secrete HCG to maintain the corpus luteum after the normal lifetime. Normal lifetime few days का होता है and that is controlling by or maintained by LH. तो LH कम हो गया, नॉर्मल लाइफ टाइम खत्म. उसके बाद नॉर्मल लाइफ टाइम के बाद उसको एनहेंस कौन करता है? HCG secreted by first by trophoblast, then it is controlled or secreted by the placenta. This is cervical
or protective plug on the mucus. एंड यहां तक अभी देखिए ब्लास्टोसिल है, मतलब ये जो स्टेज है ये ब्लास्टुला है, तो ब्लास्टुला स्टेज में देखिए हो गया इम्प्लांटेशन। कंप्लीट। चले आगे। ओके, पॉइंट्स लिख देता हूं, जल्दी करिए। डेसिडुआ, सो आफ्टर इम्प्लांटेशन, देखो हमेशा याद रखना डेसिडुआ वर्ड शुड बी यूज्ड आफ्टर इम्प्लांटेशन, नॉट बिफोर इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन the part of endometrium of mother is called decidua. Three different types, just I told. Decidua bacillus, decidua bacillus हो गया. In between villi and myometrium. Decidua capsularis in between fetus and lumen of uterus. देखिए मैंने ये जो आपको समझाया था डायग्रामेटिकली फिर से देख लीजिए, मैंने क्या लिखा, कैप्सुलरिस इज इन बिटवीन द फीटस एंड ल्यूमेन ऑफ यूटेरस। अब डायग्राम में ही उसको देख लीजिए, दिस इज एक्चुअली व्हाट, ना ये हो गया फीटस राइट, एंड दिस इज द ल्यूमेन, तो इन बिटवीन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। हाँ बिल्कुल है मदर का पार्ट, मतलब ये मैंने ये दिखाया नहीं है, थ्री डायमेंशनली आपको मैं कैसे दिखाऊं कि यहाँ पे भी ऐसे विली है, यहाँ पे भी इम्प्लांटेशन हुआ है, ये जो थ्री डायमेंशनली होता है ना, मैंने आपको टू डायमेंशनली दिखा दिया है ऊपर की तरफ, बाकी ये जो विली आप देख रहे हैं एंड जो अटैचमेंट देख रहे हैं तो चारों तरफ है ना, समझे कि एंड द डेसिडुआ पैरेंटालिस, the part other than implanted or other than implantation,
A part other than implantation is called as decidua parietalis. तो ये हो गया डेसिडुआ के बारे में. नेक्स्ट trophoblast secrete HCG to maintain corpus luteum to continue the progesterone after normal lifetime. Or lifespan. Progesterone stimulate cervical gland to secrete thick mucus to form protective plug. नेक्स्ट पॉइंट आप लोग जानते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट का नाम सुने? ग्रेविडेक्स टेस्ट जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट. प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए प्रेगनेंसी किट अवेलेबल है and that pregnancy test is scientifically called as gravidex test. उस किट में किस हार्मोन का डिटेक्शन होता है that pregnancy become confirmed or positive? HCG. अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि why not progesterone, why not estrogen, why not any other hormone? Because progesterone is secreted in both non-pregnant women and pregnant women, right? तो ये प्रोजेस्टेरोन को हम लोग कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो नहीं मान सकते. सिर्फ वही हार्मोन अवेलेबल होगा जो प्लेसेंटा से सिक्रेट होता है, only or exclusively secreted in during the pregnancy, and that is what now one of the hormone. ऐसे तो बहुत हार्मोन है, हम लोग HCG को क्यों यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ना? बिकॉज HCG is a protein hormone, because HCG is a water soluble hormone, so it excreted through the urine. बाकी जो लिपिड सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, क्या वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है? नो. इसीलिए एचसीजी का ये दो अलग अलग तरीके से उसका कंसेप्ट है कि वाई एचसीजी. एक तो ये ओनली प्रेगनेंसी में सीक्रेट होता है, दूसरा ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये यूरिन में प्रेजेंट होता है. और अगर आपको पूछा जाए कि फर्टिलिटी टेस्ट, ये तो प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, अगर आपको पूछे कि फर्टिलिटी टेस्ट करना है तो कौन सा हार्मोन डिटेक्ट करना है यूरिन में? बोलिए. फर्टिलिटी टेस्ट मींस विद द वुमेन फर्टाइल और इनफर्टाइल, एंड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ना? एलएच, प्रोजेस्टेरोन नहीं. प्रोजेस्टेरोन क्या ओवुलेशन करता है? हु इज ओवुलेटिंग? एलएच. ओवुलेशन होगा तभी तो हम फर्टाइल बोलेंगे. प्रोजेस्टेरोन होने से क्या फर्टाइल हो जाएगा? नो. तो इसीलिए एलएच इज रिस्पांसिबल फॉर दी प्रोजेस्टेरोन. दूसरी बात, कंसेप्ट को आप लोग ध्यान नहीं दिए. मैंने आपको दो कंसेप्ट ऑलरेडी बताया. चलिए आपके मान लेते कि प्रोजेस्टेरोन भी एक फर्टिलिटी हार्मोन है, लेकिन क्या प्रोजेस्टेरोन आपका वाटर सॉल्युबल है? प्रोजेस्टेरोन क्या आपके यूरिन में प्रेजेंट होगा? नो. तो फिर कैसे आप किट में कैसे डिटेक्ट करेंगे? इसीलिए मैंने आपको दो कंसेप्ट बताया था कि व्हाइट इज डिटेक्टेड इन द यूरिन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना? अगेन द प्रोटीन हार्मोन, वाटर सॉल्युबल हार्मोन, एंड विच वाटर सॉल्युबल हार्मोन है? एलएच.
प्रोजेस्टेरॉन ऑल्दो इट इज ए फर्टिलिटी हार्मोन, बट किस हार्मोन के डिटेक्शन के वजह से हम लोग फर्टाइल बोलते हैं? एलएच, क्योंकि एलएच को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, नॉट प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। तो इसीलिए फर्टिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग डिटेक्ट करते हैं, तो टेस्ट किट होता है उसमें एलएच होता है। तो प्रेजेंस ऑफ LH in the urine will confirm the fertility. Presence of HCG in the urine will confirm the pregnancy. चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, गैस्ट्रुलेशन। तो ये ब्लास्टुला, implantation, etc. we have completed. स्टार्ट करें? So coming to the gastrulation. Process of conversion of closed blastula into open gastrula. तो यहाँ पे चेंज कहां से कहां पे होता है? फ्रॉम ब्लास्टुला इनटू gastrula. The process is called as gastrulation, means formation of gastrulae, and formation of gastrula from blastula is called as what? The gastrulation. And blastula मैंने आपको दिखा दिया है, it is a closed cavity filled with what? ना blastocell. लेकिन gastrula it is not a closed, it is a open. And मैंने आपको थोड़ा बहुत एनिमल किंगडम में बताया था कि आर्केंटेरॉन होता है ओपन बाय द ब्लास्टोपोर. लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. The characteristics is cleavage stops but cell division continue. मतलब माइटोसिस कंटिन्यू. अब माइटोसिस आ गया, देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से. क्लीवेज स्टॉप्स, क्लीवेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? यस, माइटोटिक डिवीजन विद इंटरफेज विदाउट ग्रोथ फेज. इसीलिए सेल्स का नंबर तो इंक्रीज कर रहा था लेकिन सेल का साइज डिक्रीज कर रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए माइटोसिस कंटिन्यू करेगा, सेल क्लीवेज स्टॉप्स हो गया, तो माइटोसिस में तो इंटरफेस विद ग्रोथ फेज आ जाएगा ना. अब हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ द दैट एम्ब्रियो विल इंक्रीज, सो विद ग्रोथ size of embryo starts increases. Next, cytoplasmic displacement. साइटोप्लाज्म का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, पोजीशन चेंज होगा, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द एम्ब्रियो विल आल्सो चेंज. मतलब यहाँ पे शेप एंड साइज भी, साइज तो इंक्रीज किया, शेप भी चेंज होगा. लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, क्लीवेज के टाइम में देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम द ब्लास्टुला अप टू द from the zygote to the blastula, the size of the or the shape of the embryo remains unchanged. हाँ, लेकिन यहाँ पे change start होगा because the cytoplasmic displacement started. Next point, obliteration or termination
of blastocyst, closed cavity. तो यहाँ पे ब्लास्टोसिल का टर्मिनेशन होगा, ऑब्लिटरेशन होगा, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ आर्केंडरम, that is open cavity. Next, very important, the formation of free germ layer. Formation of free germ layer. Morphogenetic movement of cells. Morphogenetic movement of cells starts. and यहाँ पे morphogenetic movement दो टाइप का होता है. एक है external morphogenetic movement, called as epiboly, and second is internal morphogenetic movement, called as emboli. मतलब movement of these cells is externally and the movement of this cell is only internally. मतलब external movement और external morphogenetic movement और epiboly में होता क्या है, the cells move either external or external to internal. मतलब खाली एक्सटर्नल मूवमेंट हो सकता है या तो एक्सटर्नल टू इंटरनल मूवमेंट हो सकता है. देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, एपीबॉली और एक्सटर्नल मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. समझे कि नहीं? लेकिन अगर सेल्स का मूवमेंट कंप्लीटली और एंटायरली इंटरनल होगा देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एम्बॉली. समझे कि नहीं? cells movement only internal, then it is called as internal movement or emboli. तो यहाँ पे जो सेल्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है इसी वजह से तो साइटोप्लाज्मिक डिस्प्लेसमेंट होगा एंड शेप ऑफ द एम्ब्रियो चेंज होगा. तो ये जो चेंज होता है सेल्स का जो मूवमेंट होता है, मैंने आपको क्लीवेज में बताया था सेल्स का मूवमेंट नहीं होता, बट यहाँ पे सेल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया एंड दैट मूवमेंट आइदर एक्सटर्नल टू इंटरनल और ओनली एक्सटर्नल और ओनली इंटरनल. तो अगर एक्सटर्नल हुआ या एक्सटर्नल टू इंटरनल हुआ तो क्या बोलेंगे, एपीबॉली. अगर ओनली इंटरनल मूवमेंट हुआ तो एम्बॉली. तो यहाँ पे दोनों टाइप का मूवमेंट होता है, डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं. पहली बात तो ये जो डायग्राम हम आपके सामने कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट ह्यूमन रिलेटेड डायग्राम. ये ह्यूमन के रेस्पेक्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये फ्रॉग के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेगा इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है. ह्यूमन बीइंग के अलग टाइप का गैस्ट्रुलेशन होता है, मैं आपको वो अलग से बता दूंगा. ये जो एक्सटर्नल मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, इंटरनल मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ये फ्रॉग के केस में अवेलेबल है.
ये मैं आपको समझाया था ना मॉर्फोलॉजी, सॉरी जब हम लोग पढ़े थे सिलोन, और डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एकदम लिमिटेड होता है। आप एक चीज यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो टाइप का सेल्स बनाया है, स्मॉल सेल्स एंड लार्ज सेल्स, मतलब माइक्रोमियर एंड मैक्रोमियर्स। ह्यूमन बीइंग में तो ये नहीं है। लास्ट डायग्राम में आप चेक करिए, यहाँ पे देखो टोटल द सेल्स रेज्ड टू फॉर्म द लेयर्स, you can say the cells are arranged to form the layer that is germ layer, and मैंने इसीलिए एक पॉइंट लिखा था कि फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layer। यहाँ पे देखो 2 germ layer फॉर्म हो गया, एक्टोडर्म एंडोडर्म, ओपन कैविटी फॉर्म हो गया आर्केंड्रम, क्लोज कैविटी ब्लास्टोसिल देखो ऑब्लिटरेट हो गया कंप्लीटली। तो दिस इज ब्लास्टुला, दिस इज gastrula। with blastocyst, open cavity, this is micromeer, this is macromeer। अब यहाँ पे जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हुआ, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल टू इंटरनल हुआ कि नहीं, फिर से यहाँ पे अंदर की तरफ होता है। सो दिस इज ब्लास्टोसिल, कॉप शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया ये। This is the roof of archenteron, this is the roof of archenteron, this is blastopore, blastopore is the opening of what? Blastopore is the opening of what? Blastopore is the opening of archenteron. This is dorsal lip, ये हो गया dorsal lip, and this is ventral lip।
एंड यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करिए, यहाँ पे मैंने ब्लास्टोसेल को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज obliteration of blastocell. क्वेश्चन पूछेगा obliteration of blastocell is demarcated by what? Obliteration of blastocells means it is the end of blastulation or end of gastrulation. It is the end of the blastulation. So obliteration of blastocell is demarcated by the formation of gastrulation. मैं और मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट दैट इज एपिबॉली और एम्बॉली को डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एपिबॉलिक का भी बहुत सारे टाइप्स है, इन्वेजिनेशन दैट इज इन्वोल्यूशंस, बहुत सारे टाइप्स है, बट मैं ये जस्टिफाई ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहता हूँ, क्वेश्चंस आता नहीं है, सो यहाँ पे खाली डायग्राम करके स्किप करते हैं। कंप्लीटेड डायग्राम। खाली मेंशन कर देता हूँ आपको, ये है एपिबॉली, ये है इन्वेजिनेशन, ये है इन्वोल्यूशन, एंड ये डीलैमिनेशन। डी मतलब सेपरेशन, लैमिना मतलब लेयर, तो आप देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ द लेयर कंप्लीट हुआ कि नहीं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीलैमिनेशन, separation of the layer is called as delamination. तो इन्वेजिनेशन देखिए, इन्वेजिनेट हो रहा है अंदर की तरफ, एपिबॉली देखिए एक्सटर्नल मूवमेंट हो रहा है, इन्वोल्यूशन देखिए ये इन्वॉल्यूटेड हो रहा है अंदर की तरफ, यही सब चीजें, बहुत डिटेल्स नहीं जा रही। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द ह्यूमन गैस्ट्रुलेशन। ह्यूमन गैस्ट्रुलेशन, दो डायग्राम से फिनिश करेंगे। See,
This is trophoblast. Trophoblast will secrete a layer of cells called as amniogenic cells. And that amniogenic cell will secrete a fluid called as amniotic fluid. Amniotic fluid secreted by amniogenic cell. Amniogenic cell secreted by trophoblast. Amniotic fluid present in amniotic cavity. ठीक है? Now, very important. ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क था, ये तो टोटली एम्ब्रियोनिक डिस्क है ना? Embryonic disc, it is differentiated into two parts. ये डिफरेंशिएट होके टू पार्ट में कन्वर्ट होगा. मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूं. ये जो टू पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, एपीबॉली. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, द एपीबॉली. ये पहले क्या था, एक सिंगल था, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक डिस्क का भी चेंज होके दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ. एक है एपीबॉली, सॉरी दैट इज एपीब्लास्ट. Second is hypoblast. Second is hypoblast. So embryonic disc differentiated into two part, epiblast and hypoblast. ये पहले एक था embryonic disc, change into two part. That is epiblast and hypoblast. अब कहानी ये है, ये जो एपीब्लास्ट है will form all three germ layer. So who is the source of all the three germ layer? ना एपीब्लास्ट. लेकिन ये जो हाइपोब्लास्ट है, ये डीजेनरेट हो जाता है. Degenerate to form yolk sac. Degenerate to form the yolk sac. तो ह्यूमन बीइंग के केस में भी yolk sac होता है, बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, and that is formed from what ना, hypoblast. समझे? ये भी तो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा है ना इसका, इसमें भी सेल्स का मूवमेंट हो रहा है. So it is the beginning of the gastrulation. कंप्लीट करके मुझे कंफर्म करिए. हो गया? चले आगे. So coming to the next. यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, देखिए. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. अब देखिए मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कैसे हो रहा है. हियर ये जो एपीब्लास्ट था, एपीब्लास्ट विल फॉर्म ए
a structure which will act as a pumping organ. ये पंप करेगा तो लोअर मोस्ट सेल्स जो था ना वो डिटैच होगा. एपीब्लास्ट का जो लोअर मोस्ट सेल है वो डिटैच होगा बिकॉज ऑफ दी दैट इज पंपिंग एक्टिविटी और इसके प्रेशर क्रिएट करने की वजह से. So because of the pressure created by this structure is called as what? Now this is your what? Now embryonal pit उसको बोलते हैं और otherwise we can say that is primitive streak भी बोलते हैं. So primitive streak or primitive node or embryonic primitive streak that will create a pressure to detach the cells from the lower side, and that cells will arranged just above the हाइपोब्लास्ट. डिटैच होके किसके ऊपर आके फॉर्म करेगा? हाइपोब्लास्ट के ऊपर लेयर फॉर्म करेगा. नाउ दिस लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट ना? एंडोडर्म. क्या बोलेंगे उसको? एंडोडर्म. तो फर्स्ट कौन सा जर्म लेयर फॉर्म होता है? एंडोडर्म. उसके बाद ये कंटिन्यू करेगा. कंटिन्यू करने से फिर से और एक लेयर सेल्स इसके ऊपर बन जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेसोडर्म. तो ह्यूमन बीइंग में लास्ट क्या फॉर्म होता है? एक्टोडर्म. फर्स्ट क्या हुआ? एंडोडर्म. जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एपिब्लास्ट जो बच जाएगा, दैट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एपिब्लास्ट विल फॉर्म द एक्टोडर्म. क्लियर है? एंड जैसे ही वन बाय वन लेयर इसके ऊपर फॉर्म होता जाएगा, बहुत ही सिंपल है. ये जो हाइपोब्लास्ट धीरे धीरे कंसेंट्रेट हो जाएगा. कंसेंट्रेट होते 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 डिजेनरेट होके यॉर्क सेट में कन्वर्ट हो जाएगा. बात को समझे? तो प्लीज कंटिन्यू. Remaining amount of epiblast will form the ectoderm. And as already told, this is hypoblast. Will form the yolk sac. So this is the human being gastrulation. बाकी जॉर्म लेयर फॉर्म होने के बाद आप लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़े हैं कि फेट ऑफ जॉर्म लेयर. I told you in the previous classes there is no fate of blastomere, but the fate of germ layer is that the ectoderm will form which structure, mesoderm will form which structure, endoderm will form which structures, and we have discussed all these in the different chapters. तो आप चाहे तो एक लिस्ट बना सकते हैं
कि भाई चैप्टर पर जाइए, देखिए पढ़ने के टाइम में कि कौन सा लिखा है, मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल। जैसे कि मोस्टली आता है क्या ना, किडनी, गोनड्स, लंग्स, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये मोस्ट कॉमन जो आता है, समझे कि नहीं। गोनड्स हो गया मेसोडर्मल, किडनी हो गया मेसोडर्मल, एलिमेंट्री कैनल हो गया एंडोडर्मल, स्किन हो गया एक्टोडर्मल, नर्वस सिस्टम हो गया एक्टोडर्मल, बोन हो गया और एंडोस्केलेटन हो गया मेसोडर्मल, ब्लड हो गया मेसोडर्मल। पढ़े हैं ना। उसको एक छोटा सा लिस्ट बना दीजिए, कॉमन चीज, कॉमन जितना स्ट्रक्चर है उसका एक लिस्ट बना दीजिए, आपको हेल्प करेगा। Now we are coming to pregnancy and embryonic development. Pregnancy and embryonic development. Chorionic villi and uterine tissue interdigitate to form placenta. It is the structural and functional unit between fetus and maternal body. Placenta act as ultra filter. अल्ट्रा फिल्टर का मतलब क्या हो गया? अल्ट्रा फिल्टर का मतलब क्या है? दे विल बी सिलेक्टिवली परमिएबल और कंप्लीटली परमिएबल। तो क्या ये परमिएबल करता है ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंड कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है? प्लेसेंटा, आईजीजी। सो प्लेसेंटा एक्ट एज अल्ट्रा फिल्टर एंड अलाउ soluble organic, inorganic, vitamins, minerals, hormones, and IgG. That is antibodies against mostly which IgG? ना those IgGs, मतलब ये जो IgG होता है किसके अगेंस्ट में होता है ना, ये एनसीईआरटी का लाइन है, कुछ डिजीज के अगेंस्ट में होता है। सो IgG, that is antibodies against scarlet fever, smallpox, measles, scarlet fever, smallpox, measles, and diphtheria. एंड इसीलिए आप लोग जानते हैं कि फीमेल जब प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में भी वैक्सीनेशन किया जाता है, एंड स्पेशली अगेंस्ट दीज डिजीज, डिप्थेरिया, measles, smallpox, scarlet fever, so that the antibody which is found inside the mother
will cross through the placenta to enter into the fetus. So fetus will get the antibody against this disease before maturation, before birth. तो ये एक टाइप का क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी हुआ कि नहीं? पैसिव इम्यूनिटी, but it is a natural way. Naturally it is crossing through the placenta. So it is a process of natural passive immunity. Write it. ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसेंटा act as a barrier to prevent the mixing of fetal blood and maternal blood. क्योंकि अगर ब्लड मिक्स हो गया मदर के एंड फीटस का, तो ब्लड, मदर के ब्लड में जो हार्मफुल एजेंट है वो सीधा फीटस के बॉडी में आ जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए प्लेसेंटा इज ए barrier to prevent the mixing of the maternal blood and fetal blood. That is why the reason is what? So blood in placenta and umbilical cord is 100% fetal blood. There is no mixing of the maternal and fetal blood. तो प्लेसेंटा में जो ब्लड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है, वो किसका ब्लड है? फीटस का. उसमें मैटरनल ब्लड बिल्कुल नहीं होता है. Complete. Placenta act as endocrine. What are the different list of hormones secreted from the placenta? HCG, chorionic thyrotropin, chorionic thyrotropin is similar to TSH. थायरोट्रोपिन क्या था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ही हम लोग थायरोट्रोपिन बोलते थे ना. As it is secreted from the placenta and placenta is formed of chorion, so called as what? Na chorionic thyrotropin. Chorionic corticotropin. Corticotropin याद करिए. It is similar to ACTH, adrenocorticotropic hormone, otherwise called as what? Corticotropin. ठीक है, इसका अदर नेम क्या था? CRH, corticotropin releasing hormone, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता था, इसको स्टिमुलेट करेगा. सो corticotropin, chorionic corticotropin. नेक्स्ट, chorionic somatomyotropin. इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. और is also called human placental lactose. आप लोग इसको जानते हैं, HPL नाम सुने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा.
So HPL or human placental lactogen is the other name of chorionic somatomamotropin. तो इसका function similar to lactogen है, मतलब milk stimulating hormone, ठीक है? Plus they also secrete estrogen, progesterone, and relaxin. So these are the list of hormones secreted from the placenta. Clear है? Now, ह्यूमन बीइंग के केस में जो प्रेगनेंसी है, the human pregnancy is actually 266 days or 38 week or 9 month. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस ह्यूमन बीइंग का जो प्रेगनेंसी है उसको हम लोग 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे. 3 मंथ है ना, 9 मंथ है ना, तो एवरी 3 मंथ को हम लोग क्या बोलेंगे ना, ट्राइमेस्टर. Every 3 months is called as what? The trimester. The first 3 months is called as what? The first trimester. Next 3 months is called as second trimester. And the last 3 months is called as what? Third trimester. अब पॉइंट ये है, which is most sensitive trimester. Which is most sensitive trimester? That is first, the basic structure of fetus is formed. Cell division, cell migration, and cell differentiation occurs in which trimester? The first. So, first trimester basic structure of embryo or fetus formed by cell division, cell migration, and cell differentiation. That is why first trimester is most sensitive to teratogenic agent. Teratogenic agent means what? Now the agent which will form the baby, teratogenic baby. What is the meaning of teratogenic baby? देखो इसका concept मैं लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, कल concept समझाऊंगा. Concept ये है कि as because during the first trimester basic structure of the embryo formed, almost all the organ will form by means of the cell migration, cell division, cell differentiation. तो अगर first trimester में कोई भी harmful agent अगर embryo के function में interfere किया, then we can say that embryo will be defective. Because the proper way in which the migration of the cell, differentiation of the cell will not occur. The shape of the embryo will be defective. Normal embryo नहीं होगा, defective embryo होगा.
and that defective embryo, defective morphology at the embryo gives rise to what ना? Teratogenic baby. Commonly हम बोलते हैं monster like baby. बेबी का जो अपीयरेंस है वो तो नॉर्मल नहीं होगा ना, मॉन्स्टर लाइक हो जाएगा, अगली हो जाएगा, अलग टाइप का होगा. So that is only because of the interference of any kind of teratogenic agent in the first trimester की second की third first, क्योंकि first trimester में basic structure of embryo form हो जाता है. बात को समझे कि नहीं? So that is why it is most sensitive to teratogenic agent. So teratogenic baby जो form होते हैं, monster like baby जो form होते हैं, वो किस केस में होते हैं ना? When the teratogenic agent will interfere the fetus or embryonic development in the first trimester. इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है. कहीं पे जाना आना, ट्रैवलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज द बेबी विल बी डिफेक्टिव. एबॉर्शन होने का भी चांसेस ज्यादा इसी टाइम में रहता है, क्योंकि प्लेसेंटा तो मैच्योर्ड नहीं हुआ है ना, प्लेसेंटा तो कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं हुआ अभी तक लूज है, अभी तक इमैच्योर्ड है. तो इम्प्लांटेशन अगर लूज हुआ है तो प्रेगनेंसी लॉस होने का भी चांस ज्यादा है, इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑर्गन का खाली मॉडिफिकेशन होता है, ऑर्गन का खाली ग्रोथ होता है. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी चांस नहीं है टेराटोजेनिक होने का. बात को समझे कि नहीं? कंप्लीट है. मोस्ट सेंसिटिव टू टेराटोजेनिक एजेंट, यहाँ पे लिख दीजिए, टू फॉर्म मॉन्स्टर लाइक बेबी और टेराटोजेनिक बेबी. कंप्लीट हो गया. In the second and third trimester, minor structural modification and growth of embryo occurs. नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लेसेंटा टाइप्स विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन. हम ह्यूमन बीइंग के रेस्पेक्ट में प्लेसेंटा का टाइप्स पढ़ेंगे. नंबर 1 इज, देखिए ह्यूमन बीइंग के केस में जो प्लेसेंटा फॉर्म होता है, ह्यूमन बीइंग के केस में जो प्लेसेंटा फॉर्म होता है, बिगिनिंग में फर्स्ट में 6 लेयर होता है. फर्स्ट जो प्लेसेंटा फॉर्म हुआ उसमें कितना लेयर होता है? 6 लेयर. 3 लेयर एम्ब्रियो, 3 लेयर मैटरनल और मदर. मतलब in the beginning stage the placenta which is formed is contributed by both mother and fetus. But as the placenta gets matured, as the placenta gets, that is what now we can say a matured or that is strong, the maternal part of placenta totally eroded. तो प्लेसेंटा को हम कंप्लीटली फीटल पार्ट बोलेंगे कि मैटरनल एंड फीटल दोनों का कंट्रीब्यूशन बोलेंगे? कंप्लीटली फीटल. इसीलिए मैंने लिखा था कि प्लेसेंटा में जो ब्लड होता है वो किसका ब्लड होता है? फीटल का ब्लड होता है. फर्स्ट इट इज 6 लेयर और 6 बैरियर, बट इट इज ग्रेजुअली चेंज इनटू 3 बैरियर, एंड दैट टाइप ऑफ प्लेसेंटा is called as what? Na, that is hemochorial placenta.
हेमोकोरियल प्लेसेंटा। फर्स्ट हो गया हेमोकोरियल। Placenta formed of 3 barrier, all filler. Next, number 2. Deciduous placenta. हमने आपको बताया है डेसिडुआ का मतलब क्या है, पढ़े थे ना कि द implantation, after implantation the maternal part of placenta is called as what? Decidua. हम लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग द पैचुरेशन ऑफ द बेबी, नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, सिजेरियन की बात नहीं कर रहे, normal implantation, normal paturation of the baby, when occurs the baby will first comes out, umbilical cords also comes out, and umbilical cord जब बाहर निकलता है उसके थ्रू और उसके साथ कुछ maternal part of endometrium or that will also ruptures to come out, and maternal part को हम लोग क्या बोलते हैं, decidua. तो some part of the decidua is also comes out during the paturation, that is why it is called as what? Deciduous placenta. समझे कि नहीं? That is why it is called as deciduous placenta. A part of decidua also come along with the umbilical cord during paturation. Number 3, metadiscoidal. डायग्राम को फिर से गौर से देखिएगा, मैंने जो इम्प्लांटेशन का डायग्राम दिखाया था, इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम यू कैन सी दैट villi are formed only in one side or restricted or in all sides. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ villi is uniform or non uniform? यूनिफॉर्म. बिगिनिंग में क्या था, यूनिफॉर्म, लेकिन बाद में क्या होता है ना, ऑल द villi wing, that is what ना comes to lie in one side, डिस्क शेप हो जाएगा, डिस्क concentrated in one side is called as what, na disc, and that is why it is metadiscoidal. प्राइमरी में क्या है ना, फर्स्ट क्या है ना, यूनिफॉर्म है, लेकिन बाद में एक जगह पे आके कंसेंट्रेट हो जाते हैं. सो प्राइमरी the distribution of villi is uniform and उसको बोलते हैं diffused. फर्स्ट क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ villi था, that is called as what ना, diffused, and later it comes to form a disc like, and that is called as discoidal. First diffused, then discoidal is called as what ना, metadiscoidal. समझे कि नहीं? फर्स्ट डिफ्यूज्ड,
then it is changed into discoidal, so it is called as metadiscoidal. And the number 4, chorioallantoic placenta. Placenta formed from chorion and allantois. तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना पड़ेगा, there are 3 different type of extraembryonic membrane are there. Extraembryonic membrane actually 4 अलग-अलग टाइप का है. The membrane which is found outside the embryo is called as extraembryonic membrane. First is yolk sac, second is amnion, third is allantois, and fourth is chorion. देखो chorion जो होगा वो completely ये outside होगा, outer होगा, and amnion क्या होता है, inner होता है. हम यहाँ पे यॉर्क सैक को कंसीडर नहीं कर रहे, ऑल्दो यॉर्क सैक सबसे इनर होना चाहिए, पर यॉर्क सैक को कंसीडर हम नहीं कर रहे. तो यॉर्क सैक का फंक्शन क्या है? इट इज एक्ट एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट. गट मतलब क्या? एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल का फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट. एंड आप लोग पढ़े हैं कि विच इज द फर्स्ट हेमाटोपोइटिक ऑर्गन? कौन है? यॉर्क सैक. फर्स्ट हेमाटोपोइटिक ऑर्गन इन केस ऑफ फिटस. ये एम्ब्रियो में नहीं है, फिटस में. समझे कि नहीं? एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, यॉर्क सैक. इसके बाद लीवर आ जाएगा, लीवर के बाद बोन मैरो आ जाएगा. एम्नियन का फंक्शन है एक्ट एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्शन. allantois का फंक्शन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी, एंड कोरियन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स. मैं हर जगह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक नहीं लिख रहा हूं, एक जगह पे लिख दिया हूं. who act as extra embryonic gut, who act as extra embryonic protection, who act as extra embryonic kidney, who act as extra embryonic lungs. फंक्शन अब बहुत ही क्लियर है. प्रोटेक्शन है, किडनी मतलब एक्सक्रीशन का काम करेगा ये, एंड लंग्स मतलब ये रेस्पिरेशन का काम करेगा. So these are the 4 different type of extraembryonic membrane with clear cut function. समझ में आ गया? एम्नियन तो मैंने बताया था विद द एमनियोटिक फ्लूइड. जो मेन काम क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम. प्रोटेक्शन मतलब क्या है? प्रिवेंट एम्ब्रियो फ्रॉम ड्राइनेस. ये एक तो डेसिकेशन से प्रोवाइड करेगा, मतलब प्रिवेंट फ्रॉम द ड्राइनेस, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन. नंबर 2 ये कुशन का भी काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की काम करता है. समझ में आया कि नहीं? सो दैट हम लोग को पता है कि जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड का क्वांटिटी कम हो जाता है, बेबी का मोटिलिटी डिक्रीज कर जाता है. एंड मोटिलिटी डिक्रीज किया मतलब ये इंडिकेट करता है कि बेबी का पैर्चुरेशन का टाइम करीब आ रहा है. कभी कभी वाटर बैग ब्रेक हो जाता है, एमनियन जो लेयर है वो ब्रेक हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्वांटिटी कम हो जाता है, तो उस केस में बेबी का डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ड्राइनेस. इसलिए हर चीज बारीकी से समझना पड़ता है. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एंड आधा घंटे में शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर.